Welcome back children, welcome to e-learning mathematics classes. Today in this video we will be doing perpendicular bisector. The perpendicular bisector of a line segment is the line that is perpendicular to the line segment at its midpoint. So perpendicular line तो हमें पता है जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है तो उसे हम बोलते हैं कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है. Now what is bisector? Bisector, meaning of bisector is dividing it in two equal pieces. So जब एक perpendicular line दूसरे लाइन को bisect करती है तो उसका मतलब होता है वो उसे equally बीच से कट कर रही है. So perpendicular bisector of a line segment is the line that is perpendicular to the line segment at its midpoint. Middle point पे perpendicular होती है. So here you can see I have drawn a diagram. AB. Now AO is the midpoint of AB. Now CD is perpendicular to AB. CD AB से perpendicular है and it is also cutting. It is intersecting this line segment into two equal parts. So AO equals to BO. So ये इसके midpoint से pass कर रहा है. So that means AO is equals to BO. Midpoint means this, right? जब midpoint होता है तो दोनों एक दूसरे से equal होते हैं. So AO is equals to BO. And CD is perpendicular to AB. So CD is the perpendicular bisector. We will write here CD is the perpendicular bisector. Bisector. Why it will be bisector? I have just explained because it is bisecting. It is cutting the line to the midpoint of AB. Perpendicular bisector of AB. Okay. So I hope you have understood this one. Now let us do one question on perpendicular bisector. We will draw a perpendicular bisector of a line segment using a ruler, a compass, and you will need one pencil. Okay. Now what is the question? Draw a line segment of 8.5 cm. First of all, draw a line segment of 8.5 cm. सबसे पहले एक 8.5 cm के लेंथ का एक लाइन सेगमेंट बना लीजिए इस तरीके से. You can give it a name A, B or any name you wish. So this is an 8.5 centimeter line segment. Now we have to draw a perpendicular bisector of this line segment. Now what are the steps? First of all, take the compass and draw an arc with center A. इस साइड से आपको एक आर्क बनाना है. कॉम्पस को आप कोई भी एक रेडियस खोल लेंगे बट ये AB का हाफ से ज़्यादा होना चाहिए. इट शुड बी मोर देन द हाफ ऑफ दिस लेंथ. तो इससे हाफ से ज़्यादा इतना लेंथ का आप खोल लीजिए. नाउ मेक एन आर्क ऑन दिस लाइन सेगमेंट इन दिस वे. ऐसे आप एक आर्क बनाइए. ओके. नाउ इन स्टेप 2 अब यही कॉम्पस को बिना मूव करे B पे रखिए, नेक्स्ट पॉइंट पे रखिए इन दिस वे विद द सेम रेडियस. ड्रॉ अनदर आर्क टू इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क. तो ये इस तरीके से बड़ा सारा आर्क बनना चाहिए ताकि वो पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट करे. Now the previous arc is very small, right? So you need to enlarge the previous arc again. इसे आपको बड़ा बनाना पड़ेगा so that ये इस तरीके से intersect करे, so that it intersects each other in this way. Okay? Now take the pencil. जहाँ पे ये intersect कर रहा है वहाँ पे point बनाइए and take the ruler and draw one line. इस तरीके से ये दोनों points को join कर दीजिए. Join these two points. Now this becomes this line. You can give it a name. CD is a perpendicular bisector. इसे middle point दे दीजिए. Now how we can check कि ये सच में इसका perpendicular bisector है कि नहीं. First to check whether it is perpendicular or not, use a protector. ये 90 डिग्री होने से ये perpendicular होता है. Yes, it is 90 degree. Now check whether AO is equals to BO or not. AO और BO का length same है कि नहीं. See, AO is 4.2 and something. 2 से थोड़ा ज़्यादा है ये. So we can say 4.25. Okay. And this one, this is also 4.3 नहीं है. 3 से थोड़ा कम है. This is also 4.25. Now if you add 4.25, you will get 8.5. Okay. So these two line segments are divided equally. So we will write here CD is perpendicular to AB, or you can write CD is the perpendicular bisector of AB. In this way you will draw perpendicular bisector. Okay children. So I hope you have understood this one. Thank you for watching.